Good morning, dear student. Welcome to my YouTube channel, It's Just Mathematics. Dear student, in last class we discussed integration of irrational function. Okay, so there were two lectures, part 1 and part B. Okay, part 1 and part 2. We discussed all the required concept for integration of irrational function. Okay, so based on that we can solve all the question of exercise 9G. Okay, 9G from elements of mathematics. So students who are preparing for Odisha State Board, that is CHS board, you can go through this lecture, and this exercise is very important from the viewpoint of long question. 1 4 mark or 6 mark question will be asked from this exercise. Okay, so video को end तक देखते रहिए so that it will be benefited for you. All right, so let's see the first question. Question number 1 लो first question कौन square root of find the integration of कौन अच्छी ना integrand टा कौन अच्छी 2x plus 5 रो square root by x. So এটা ওটা linear expression, এটা ওটা linear expression. So এটা type 1 ले पड़ी आसी. So जो linear expression लो square root अच्छी ताको हमें put करिबा t square 2x plus 5 is equal to t square 2 dx is equal to 2t dt. So 2 cancel out. So dx will be how much t dt. आउ एटा केते हिजबो t square root over dx रो वैल्यू केते t dt by x रो वैल्यू केते हिजबो x रो वैल्यू हमें पुट करिबा केते हिजबो x is equal to t square minus 5 by 2. Put everything t square minus 5 by 2. ठीक अछि कि नहीं. सो कांस्टेंट केते 2 बाहर को पळेबो एटा केते हिजबो t square dt by t square minus 5. सो एठी कौन है गला. सो समझते देखो एटा कौन डिग्री सेम है गला डिवीजन करिबा बट हमें जस्ट एठी कौन डायरेक्टली यूज करि पाए. देखो एटा मु केमति ब्रेक करछि t square minus 5 plus 5 लिखियो कि नहीं. सो t square minus 5 dt एटा लिखियार माने दिस बाय दिस 1 है जो. सो 2 dt एटा जो 2 dt दिस बाय दिस केते हिजबो 2 into 5 10 dt by t square 5 टा रखी होबो root 5 रो स्क्वायर. बुझिले कि नहीं. एवरीवन गेटिंग. सो देन कोन हिजबो यार इंटीग्रेशन केते हिजबो 2t plus 10 into यार फार्मूला केते 1 by 2a a केते एठी root 5. ओके ln t minus root 5 by t plus root 5 plus c. ओके t बदल केते पुट करिवा स्क्वायर रूट ऑफ 2x plus 5. सो 2 into 2x plus 5 रो रूट ओवर प्लस 2 कटि होले 5 by root 5 ऊपर पळेले ओनली root 5 ln t बदल केते 2x plus 5 रो स्क्वायर रूट minus root 5 by 2x plus 5 रो स्क्वायर रूट plus root 5 plus c. Okay, so this is our answer. Everyone write it down. Dear student, our next question कौन अछि x square minus 7 root over by x. Okay, so एटा कौन इजी होवा पई x square minus 7 is equal to put कर दो t square. देखो के इजीली हिजबो जने t भी पुट करि पारे बट अगेन one more substitution is required but t square कर देले इजी हिजबो 2x dx is equal to 2t dt. 2 cancel. dx will be how much t dt by x. Okay, so put everything here. एटा केते हिजबो t square root over dx बदलर केते t dt by x. so x केते x square हिजबो. देखो x square रो वैल्यू केते हिजबो बेटा t square plus 7. एठी जो x square बदलर केते पुट करिवा t square एटा केते हिजबो t square dt by ए जो x square को लिखिया केते t square plus 7. सो एबे इजीली एटा को सॉल्व हे जो एटा कोन करबा t square plus 7 minus 7 by t square plus 7 dt. so then कोन हे जो dt minus 7 dt by t square minus एटा कोन 7 टा रखियो बा root 7 लो स्क्वायर. ऑल राइट, सो दिस गोइंग टू बी t minus 7 into एटा केते हिजो बेटा 1 by root 7
tan inverse t by root 7 plus c. So this will be equal to t eta kete minus root 7 tan inverse t by root 7 plus c. So t ro value kete x square minus 7 lo root over put that one tan inverse t बदल केते पुट करिवा x square minus 7 lo square root by root 7 plus c. So this will be our answer. Everyone write down. Dear student, आम next question solve करिवा जोटा कि third question of question number 1 and this question is from exercise 9G. All right, so एटी कौन बेटा ऑब्जर्व करछंती एटी भी उटे लिनियर अछि आउ लिनियर रो अंडर रूट अछि. सो ए जो x रो अंडर रूट अछि जो लिनियर जो एक्सप्रेशन लो अंडर रूट थिबो ताकू t स्क्वायर पुट करिया. ओके, एटा टाइप 1 ले आसुची. सो x इज इक्वल टू t स्क्वायर देन dx विल बी 2t dt. ऑल राइट, सो कन्वर्ट एवरीथिंग. दिस विल बी t स्क्वायर रो रूट ओवर dx विल बी 2t dt by eta kete hobo t square plus 2. So this going to be 2 will be taken outside. All right, so then kon hobo t square by t square plus 2. So actually एठी kon degree 2 एठी degree 2 first procedure kon long division, but आमे को देखो केमती करिवा t square plus 2 गुटे ऐड करिवा 2 माइनस कर दो देन इंडिविजुअल डिवाइड कर दो. बुझी अदरवाइज ये टेक्निक जो मैंने जानी पारना एटा कौन कॉमन सेंस प्योरली ऑन ऑब्जर्वेशन. ओके, सो जो मैंने ए मेथड जानी पारना तो डायरेक्टली गो फॉर डिवीजन. ओके, देन दिस विल कम आउट इनटू दिस फॉर्म. ऑलराइट, सो दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस. सो 2 बाहर रहिला. दिस बाय दिस विल बी dt इंटीग्रेशन dc dt minus 2 dt by t square plus 2. Okay, so this is going to be 2t minus 2 to 4 into यार केता होबो एटा रूट 2 रो स्क्वायर लिखि होबो ए 2 टा को रूट 2 रो स्क्वायर लिखि होबो. तो फॉर्मेट कोन 1 by root 2 tan inverse स्टैंडर्ड फॉर्म का आसिला t by root 2 plus c. so put everything 2t minus एटा कोन 2 root 2 आ रहइबो गुटे रूट 2 कटि होला परे tan inverse t by root 2. all right, देन t बदल आम कौन पुट करवा रूट एक्स. t बदल कौन पुट करवा रूट एक्स माइनस 2 रूट 2 tan इनवर्स रूट एक्स बाई रूट 2 प्लस c. ओके, सो एवरीवन राइट डाउन. डियर स्टूडेंट, आम एबे कौन पुट करवा 3x प्लस 2 को कौन नहीं जावा t क्यू. ऑल राइट, so 3dx is equal to 3t square dt. बुझेला कि नहीं 3dx केते हिजबो 3t square dt. so dx रो वैल्यू केते हिजबो एटी 3 3 कटि गला. so dx will be t square dt. so put everything, then x रो वैल्यू केते हिजबो x is equal to tq minus 2 by 3. okay, x रो वैल्यू केते tq minus 2 by 3 into एटा कहते हैं टी क्यू रो पावर 1 by 3. ओके, एंड dx बदल कहते हैं टी स्क्वायर dt. देन कौन हो 1 by 3 बाहर को पलैले एठी t एठी उठे टी स्क्वायर टी क्यू एठी मल्टीप्लाई हेले कहते t टू द पावर 6 minus 2 टी क्यू dt. बुझेला. सो 1 by 3 बाहर थिला यार इंटीग्रेशन कर ले कहते t टू द पावर 7 by 7 minus 2 t to the power 4 by 4 plus c. so 3 टा मल्टीप्लाई कला पर आंसर केता आसीबो t to the power 7 by 21 minus t to the power 4 by 82 आउट रहइबो 6 plus c. ओके, सो हमें एबे कोन करबा t रो वैल्यू पुट करबा केते पुट करबा 3x plus 2 रो पावर केते पुट करबा बेटा. नले आउटे काम करो समझते तो कौन एठू कॉमन नहीं जिबा t टू द पावर 4 कॉमन नहीं जिबा नहीं गले केते रहइबो आउ 21 भी कॉमन नहीं होबो. ओके, तो 21 ने 3 कॉमन नहीं जिबा
सो 3 कॉमन नेले कौन हम नल दी जन एलसीएम नहीं जाते बेटर होता है ठीक है ओनली नवा T4 नो प्रॉब्लम नेला परे TQ माइनस TQ by 21 माइनस 1/6 प्लस C ओके एबे T रो वैल्यू पुट करियो ओके सो देन आम T बदल के पुट करदे 3x प्लस 2 रो पावर 1/3 सो पुट करदे आमको आंसर एतिक आस सब मन रखिबो जेहेतु सेठी पावर 1/3 थिला से लिनियर एक्सप्रेशन को आम नेले TQ सेटा बेसी इंपोर्टेंट ओके सो आम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिया डियर स्टूडेंट आम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी x plus 2 by 2x minus 1 लो पावर 1/3 ऑलराइट सो जेहेतु ये लिनियर पावर 1/3 अच्छी 1/2 थिले t स्क्वायर 1/3 थिले t क्यूब 1/4 थिले t to the power 4 ऑलराइट सो सेम लॉजिक अनुसार 2x minus 1 put 2x minus 1 is equal to t cube then 2 dx is equal to 3 t square dt then dx will be 3t square dt upon 2 okay so then 2x will be t cube plus 1 x will be t cube plus 1 by 2 okay एबे x plus 2 रो वैल्यू केते सिंपलीफाई कर दो x plus 2 केते ही जीवो t cube plus 1 by 2 plus 2 सो केते ही जीवो t cube एटा केते 4 plus 1 5 by 2 ओके वैल्यू एठी पुट करा हबो x plus 2 रो वैल्यू केते हिजबो t cube plus 5/2 into dx बदल केते 3t square dt by 2 ओके सो y एटा केते हबो t cube रो पावर 1/3 एठी उडे t एठी उडे t कटि जिवो सब कांस्टेंट को बाहर को नहीं आसिया 9 सॉरी एठी उडे 3 ओके देन 3/4 will be taken outside एठी उडे t कैंसिल हो जिवो ठीक अछि सो हम पाखरे आ रिमेनिंग टर्म कोन रहइबो t cube plus 5 into एठी t उडे t कैंसिल हो छि t dt बुझियला सो देन 3/4 मल्टीप्लाई कर दवा t4 plus 5t dt बुझियला कि नहीं सो यार इंटीग्रेशन काढिया 3/4 बाहर थिला यार t to the 5/5 plus 5t square by 2 plus c सो एटा मल्टीप्लाई कर दवा 3t to the 5/20 plus 15t square by 8 plus c एबे t बदल केते पुट करिवा 2x minus 1 लो पावर 1/3 so 3/20 into 2x minus 1 लो पावर 5/3 plus 15/18 into 2x minus 1 लो पावर 2/3 plus c okay so everyone write down dear student our next question कौन अच्छी x plus 2 into x plus 1 लो पावर 1/4 ओके एठी जेहेतु एठी पावर फ्रैक्शन अछि 1/4 सो एठी सेति पई एटा इरेशनल फंक्शन हे गला लॉजिक कोन एठी सब्स्टिट्यूशन करने आबो सेही लिनियर को कोन ने आबो ए जो फ्रैक्शनल पावर एलिमिनेट करिया पई 4 नबा t to the power 4 then dx will be 4 t cube dt ओके देन x रो वैल्यू केते hi जिवो ए जो x plus 2 रो वैल्यू केते hi जिवो एटी x plus 1 t4 so x plus 2 केते hi जिवो x plus 1 plus 1 so that is t4 या बदल t4 plus 1 बुझे लगी नहीं सो वैल्यू पुट कर दवा सब t4 plus 1 into एटा केते हबो t4 रो पावर 1/4 into 4t cube dt so t4 plus 1 एटा केते 4t4 dt ओके बुझी होची कि नहीं सो 4 बाहर को पळेले t8 plus t4 dt so this going to be 4t to the power 9/9 plus 4t to the power 5/5 plus c okay then t रो वैल्यू 4/9 बाहर रहइबो t रो वैल्यू केते सॉरी यस t रो वैल्यू x to the power 1/4 so this will be 9/4 plus 4/5 into x plus 1 लो power 5/4 plus c
बुझे कि नहीं सो एठी जो थिला हमें टी रो वैल्यू केते हिजो टी रो वैल्यू x plus 1 power 1/4 सेटा पुट कर दले ठीक अछि so this will be our answer everyone write down or one can take common x plus 1 power 5/4 then simplify and then write the answer or you can leave the answer here also no problem. Dear student, we are having next question x minus 1 by x plus 2 to the power 3/4 dx. Alright, so it fraction of power kon achi 3/4 sorry linear of power 3/4 then denominator kete achi 4 so that linear will be substituted as t to the power 4. Alright, then dx will be differentiating both sides with respect to x we get 4tq dt. Alright, बुझे कि नहीं then value of x will be t4 minus 2 अतः x minus 1 is equal to t4 minus 3. Okay, so put everything in new variable that is t4 minus 3 into dx बदल रे 4 tq dt by केते हिजबो एटा t to the power 4 to the power 3/4 4 cancel so tq cancel then केते हिजबो आंसर 4 हिजबो 4t4 minus 12 dt. All right, so its integration will be 4t to the power 5/5 minus 12t plus c के t बदल केते पुट करिवा x plus 2 रो पावर 1/4 t बदल केते पुट करिवा x plus 2 रो पावर 1/4 so 5/4 minus 12 t बदल केते पुट करिवा x plus 2 रो पावर 1/4 plus c. All right, so everyone write the answer. Dear student, everyone observe here a question kon achi dx by root x minus x to the power 1/3 so this can be written as x to the power 1/2 minus x to the power 1/3 so type 2 रे format गुटे linear of power 1/m and plus or minus आ गुटे linear of power 1/n so what we have to put LCM of 2 and 3 is 6 so put x is equal to t to the power 6 हमर t to the power k थिला k टा कोन थिला LCM of m and n 2 3 LCM 6 एठी linear expression के only x so x is equal to t to the power 6 so dx will be 6 t to the power 5 dt so this will be 6 t to the power 5 dt upon eta kete hijibo t to the power 6 ro power 1/2 minus t to the power 6 ro power 1/3 so this will be 6 t to the power 5 dt upon tq minus t square. All right, so t square common नहीं गला पर 6 तो बाहर को पळेला t square common नहीं गले केते हबो एठी t square कटि जबो tq by t minus 1 dt getting everyone एटा हिजबो कि नहीं t square common नहीं गले एठी t square कटि होला ऊपर tq रहइबो तळे t square common नेला पर remaining term t minus 1 so एबे कोन ऊपर पावर 3 denominator of power 1 improper go for long division tq अछि केते पडिबो t square tq minus t square minus plus एठी t square आइला कोन हबो plus t पडिबो plus t पहिले t square minus t minus plus t आसिला so t आसिले plus 1 t minus 1 minus plus so 1 रहिबो लास्ट रे so we can write this one as कोन लिखि परिबा t square plus t plus 1 plus 1 by t minus 1 यार integration dt yes or no so this will be 6 multiply कर दवा सबआडे tq by 3 plus 6 t square by 2 plus 6t okay plus 6t plus 6 ln t minus 1 plus c getting
So this will be 2t cube plus 3t square plus 6t plus 6 ln t minus 1 plus c. So now put the value of t, that is x to the power 1 by 6. Value of t will be x to the power 1 by 6. So put 1 by 6 into 3 plus 3 into x to the power 1 by 6 into 2 plus 6 into x to the power 1 by 6 plus 6 ln x to the power 1 by 6 minus 1 plus c. Okay, so this will be 2 x to the power 1 by 2 plus 3 x to the power 1 by 3 plus 6 x to the power 1 by 6 plus 6 ln x to the power 1 by 6 minus 1 plus c. So everyone write down, this will be our final answer. Dear student, our next question कौन अच्छी 3x plus 4 by 2x minus 3 रो square root. एटा linear तो linear रो square root अच्छी type 1 ले आसी होची. So put that linear, that is 2x minus 3 is equal to t square. सब तो concept discuss करी सारछंती. So 2 dx is equal to 2t dt, differentiating both sides with respect to x, 2 cancel out. So dx will be only t dt. Now you have to find the value of 3x plus 4 will be how much. Okay, 2x is equal to how much, t square plus 3, then x will be by 2. Yes or no? Now 3x plus 4 will be how much, 3 into t square plus 3 by 2, then x बदल रे t square plus 3 by 2 plus 4. LCM नहीं के को सॉल्व कर ले कहता होगा 3t square plus 9 plus 8 by 2. So this going to be 3t square plus 17 by 2. Okay, so सब वैल्यू गुड़ा करेक्टली आमे पुट करिया. ठीक अछि. So हमर कोन हे जिवो, 3x plus 4 will be 3t square plus 17 by 2. dx will be how much, t dt by एटा कोन t square रो 1 by 2. So एटा उटा t हे जिवो. ओके, ए t कैंसिल हे जिवो. So 1 by 2 कांस्टेंट बाहर पळेबो, 3t square plus 17 dt. ओके, so then कोन हे जिवो, यार इंटीग्रेशन काढिया. वेरी सिंपल. केते हे जिवो, 3t cube by 3 plus 17t plus c. ओके, 3 कटि गला. So t cube by 2 plus 17t by 2 plus c, and the value of t is square root of 2x minus 3. t रो value केता होबो, 2x minus 3 रो square root by 1 by 2. So 3 by 2 we can write plus 17 by 2. t रो value केते 2x minus 3 रो power 1 by 2 plus c. Okay, so this will be our answer. Everyone write down. Dear student, our next question कौन अछि, 7x plus 4 into square root of 3x plus 2 dx. Okay, so हम कौन दीटा linear multiply के अछि and जनकर under root अछि. So जो linear expression लो square root अछि ताको हमें put करिवा t square. 3x plus 2 will be t square, then 3 dx will be 2t dt. All right, so dx will be कौन हे जिवो, 2t dt by 3. So put here. आउ कौन हबो, 3x is equal to t square minus 2, then x will be t square minus 2 by 3. Okay, x रो वैल्यू एति के जिवो. तापरे कोन करिवा, 7x plus 4 रो वैल्यू फाइंड आउट करिवा. ओके, 7x plus 4, so 7 into एति की 7t square minus 14 by 3 plus 4. So केते हिजबो, 7t square एटा 12 minus 14 minus 2 by 3. So put करिया केते होबो, 7t square minus 2 by 3 into एटा केते
टी स्क्वायर स्क्वायर टी हो इंटू 2t/3 dt ओके सो कौन हो 2/9 कांस्टेंट बाहर को पड़ेबो 7t⁴ माइनस 2t स्क्वायर dt ठीक अच्छे सो दिस विल बी 2/9 कांस्टेंट बाहर रहिबो 7t⁵ माइनस 2q/3 प्लस c ओके एबे t रो वैल्यू आमे पुट करबा केते पुट करबा t रो वैल्यू ना 3x plus 2 रो पावर 1/2 ओके पुट एवरीथिंग एंड गेट द आंसर डियर स्टूडेंट आमे t रो वैल्यू 3x plus 2 रो पावर 1/2 पुट कर देले सो हमर आंसर एति हेतिबो सेठी केते t⁵ थिला ओके सो t रो वैल्यू 3x plus 2 रो पावर 1/2 हेले 5 सहित मल्टीप्लाई हेगी 3x plus 2 to the power 5/2 हो जिवो सो एठी भी 3x plus 2 to the power 3/2 ओके आ जो कांस्टेंट थिला मल्टीप्लाई कर देले एठी आसीओ 14/45 एठी आसीओ 4/27 ओके सो एवरीवन राइट डाउन सो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि 3x plus 1 into x minus 2 to the power 9/2 ठीक अछि सो एटा लिनियर एटा भी लिनियर एठी जो लिनियर ऑफ पावर जो फ्रैक्शन अछि 9/2 डिनोमिनेटर 2 अछि ना सो दैट लिनियर को पुट करिवा केते t स्क्वायर x minus 2 is equal to t square then dx will be 2t dt okay so x is equal to t square plus 2 अतः 3x plus 1 is equal to 3t square plus 2 plus 1 so this will be 3t square 6 plus 1 kete is 7 okay so put everything in new variable 3t square plus 7 into eta kete is t square of power 9/2 into 2t dt 2 to constant बाहर को पळेला एठी कते आसीबो 9 2 to cancel 9 एठी मल्टीप्लाई हेले 3t⁴ 11 plus 7t⁴ 9 ओके एठी आ गुटे अछि t सो एटा 12 हे जिवो एटा 10 हे जिवो ठीक अछि 2 तो बाहर को पळै छि dt सो 2 into 3t⁴ 13/13 plus 7t⁴ 11/11 plus c okay so multiply कर दबा 6/13 t⁴ 13 plus 14/11 t⁴ 11 plus c t बदल केते पुट करबा t is equal to केते पुट करिया x minus 2 रो पावर 1/2 ओके सो एठी पुट कर दबा 6/13 कांस्टेंट बाहर रहइबो एटा केते हिजबो x minus 2 रो पावर 13/2 plus 14/11 कांस्टेंट बाहर रहइबो x minus 2 रो पावर 11/2 plus c okay so this will be our answer or you can taking the LCM and taking common x minus 2 to the power 11/2 you can get the matched answer with your book all right so everyone write down so dear student next question kon achi 2x plus 5/x plus 2 to the power 7/2 all right so put kon kariba eta भी linear so a linear of power 7/2 अछि ना so a linear को substitute कराबो x plus 2 is equal to t square okay so dx will be how much 2t dt all right so this going to be t square minus 2 okay अतः 2x plus 5 will be how much 2 into t square minus 2 plus 5 okay so this will be t square minus 4 plus 1 so plus 1 रहिबो minus 4 plus 5 1 रहिबो so this expression will be 2t square plus 1 so put here t square to the power 7/2 that is t to the power 7 dx will be how much 2t dt all right so this will be how much
So 2 multiply here 4t cube plus 2t by t to the power 7 dt. All right. So individual divide कर दो 4t to the power minus 4 dt plus t बाहर पड़ेगा t to the power minus 5 t to the power minus 6 dt. All right. So this will be 4 बाहर पड़ेगा t to the power minus 4 plus 2 t to the power minus 6 dt. All right. So 4 into t to the power minus 3 by minus 3 plus 2 into t to the power minus 5 by minus 5 plus c. So this will be minus 4 by 3 into t to the power minus 3 minus 2 by 5 t to the power minus 5 plus c. Okay. So answer केते हिजबो minus 4 by 3 into t to the power 3 minus 2 by 5 into t to the power 5 plus c. So t बदल केते पुट करिबा x plus 2 रो power 3 by 2. So minus 4 3 into x plus 2 रो power 3 by 2 minus 2 by 5 into x plus 2 रो power 5 by 2 plus c. Okay. So this will be our answer. Everyone write down. Dear student, the question number B, bit V and VI from question number 2. That two question we have solved in lecture number 10. Okay, in part 1, that is integration of irrational function. In type 3 we discussed all these two problem. You can watch that video to get the answer of this question. All right. So watch lecture number 9 part 1, and that two question will be in type 3 integral. All right. Okay. So dear student, in the next class we will solve question number remaining question, that is 3, 4 and 5. All right. Okay. Let's stop the class here. Bande Mataram. Jai Hind.